Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you're enjoying the best of health. I welcome you in my class. That is English for grade 3. We are going to start unit 8. Its title is Grandpa's Garden. Yes, my dear fellow teachers and my dear students, this is the SLO based lecture division for this unit. First, we'll talk about it and then we'll discuss what this unit is all about. So in lecture 1, under the title of grammar, we learn about common and proper noun, and we'll cover the SLO to recognize general naming words as common nouns and particular naming words as proper noun, classify nouns as common and proper nouns, names of people, pets, places, holidays, etc. Lecture 2, we learn about past form of verb, past indefinite tense, simple past tense, and we'll cover the SLO to identify and use the structure of simple past tense for completed actions with or without mention or specific time. Lecture 3, we learn about prepositions and we'll cover the SLO to recognize and use words, for example, with, in, over, at, from, into, and, out of, etc. Lecture 4, under the title of language focus, we learn weak forms of do and have in contraction, and we'll cover the SLOs to pronounce weak forms of a, the in simple phrases and of be in contraction, recognize and pronounce the weak forms of do and have in contractions. Lecture 5, we'll start reading and understanding the text, and we'll cover the SLO to apply strategies to comprehend questions for tenses in a variety of following question types: factual, personal response, interpretive. Lecture 6 will continue and complete reading and understanding of this text, and we'll follow the SLO to apply strategies to comprehend questions for tenses in a variety of following question types: factual, personal response, interpretive. Lecture 7, under the title of oral communication skill, we learn to express emotions, joy, sadness, and anger, and we'll cover the SLO to demonstrate conventions and dynamics of oral interactions in groups to express joy, sadness, and anger. Lecture 8, we learn writing an invitation, and we'll cover the SLO to write guided short informal invitations to friends and family members to demonstrate the use of following conventions: purpose, so date and time, venue, name of addressee, and sender. Lecture 9, we learn to identify a paragraph, and we'll cover the SLO to recognize and understand that sentences join to make a paragraph. In a paragraph, sentences join to make sense in relation to each other. Identify paragraph as a larger meaningful unit of expression representing unity of thought. Yes, my dear fellow teachers and my dear students, this is the SLO based lecture division for this unit. Now let's find out what this unit is all about. The title of this unit is Grandpa's Garden, यानी कि दादा जान का बाग। तो बेटा जो बाग हैं उसमें क्या होता है? पौधे होते हैं, फल फूल होते हैं, और ये सब के सब कौन इनको पैदा करता है? अल्लाह सुब्हानहू तआला। सो ये जो किस तरह से पौधे हमें अल्लाह ताला से कनेक्ट करते हैं, ये दिस इज कॉल्ड द नेचर। व्हाट एवर अल्लाह सुब्हानहू तआला हैज़ क्रिएटेड उसको कहते हैं नेचर। और नेचर में जो भी चीज़ है बेटा वो अल्लाह की एक निशानी है, वो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से जोड़ती है। अब देखते हैं कि नेचर को इस यूनिट में किस तरह से डिस्कस किया गया है। तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है, आमिर विजिट्स ग्रैंडपा वंस अ वीक। आमिर हफ्ते में एक मर्तबा अपने दादा जान को मिलने जाता है। ही लाइक्स टू स्पेंड टाइम विद हिम, उसको उनके साथ वक्त गुजारना पसंद है। He loves the leaves and flowers and trees of his grandpa's garden. उसको अपने दादा जान के बाग के फूल, पत्ते और दरख्त पसंद हैं।
Amir helps to water the plants. Amir पौधों को पानी देने में मदद करता है. Amir learns a lot of things from his grandpa about plants. Amir ने अपने दादा जान से पौधों के बारे में बहुत सी चीजें, a lot of things, बहुत सी चीजें सीख रखी हैं. Amir helps with the compost. Amir मदद करता है खाद डालने में. And works with his grandpa all day. और अपने दादा जान के साथ पूरा दिन काम करता है. Very good, he's a good boy. When they finish, जब वो काम खत्म कर लेते हैं, they eat the ripe fruits. तो वो पके हुए फल, ripe, बेटा जो फल खाने के काबिल हो जाते हैं ना, उनको ripe कहते हैं. तो वो पके हुए फल खाते हैं. One day, grandpa didn't eat his pear. एक दिन दादा जान ने अपनी नाशपाती ना खाई. What's wrong? क्या हुआ? Asked Amir. Amir ने पूछा. My garden is dying, replied grandpa. दादा जान ने कहा, मेरा बाग तबाह हो रहा है, मेरा बाग खत्म हो रहा है, मर रहा है. Why? क्यों? Asked Amir. Amir ने पूछा. So, pests that kill the plant. Wait a minute. So there is a text behind it. I need to remove it. Wait a minute. So बेटा एक्चुअली यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसमें क्या है कि दादा जान जो नाशपाती खा रहे थे उसको पेस्ट क्या होते हैं? ऐसे कीड़े होते हैं जो पौधों को और फलों को नुकसान पहुंचाते हैं. तो वो उन फलों को खा रहे थे जिसकी वजह से दादा जान परेशान थे और उन्होंने कहा कि इस तरह तो मेरा बाग जो है वो खराब हो जाएगा. Pests that kill the plants. Without ladybirds, the garden will die. अब इसका हल क्या है कि लेडी बर्ड्स को लाया जाए. और लेडी बर्ड्स क्या करती हैं? वो जो प्लांट्स को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े हैं उनको वो खा जाते हैं. जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं क्लिप में कि वो जो पेस्ट्स होते हैं, इस तरह के बहुत से कीड़े होते हैं जो पौधों को, फलों को नुकसान पहुंचाते हैं. और लेडी बर्ड्स क्योंकि इनको खा जाते हैं इसलिए. अब देखिए ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक सिस्टम है बेटा कि लेडी बर्ड भी एक कीड़ा है, लेकिन ये उन कीड़ों से जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं उनसे महफूज कर देता है. तो अल्लाह ताला ने कैसे ऑटोमेटिकली खुद ही सारा सिस्टम सेट किया. इसका मतलब है अब उनके बाग को लेडी बर्ड की जरूरत है. I'll bring you a bug or two. मैं आपके लिए लाऊंगा एक या दो कीड़े मैं आपके लिए लेके आऊंगा. said Amir. आमिर ने कहा. For a whole week, पूरा एक हफ्ता आमिर looked and searched. आमिर ने देखा और तलाश किया. He collected 6 from the field. और उसको खेत में से 6 लेडी बर्ड मिल गए. Next week, अगले हफ्ते आमिर went to visit grandpa. आमिर दादा जान को मिलने आया and showed him jar of 10 bugs. और उसने अपना जार मर्तबान दिखाया जिसमें 10 कीड़े थे, 10 लेडी बग थे. You have done well, oh my boy. मेरे बच्चे तुमने बहुत अच्छा किया. You have done well, grandpa said. तुमने बहुत अच्छा किया, दादा जान ने कहा. With a tear in his eyes. और उनकी आंखों में आंसू थे. Grandpa was very happy. बेटा ये खुशी के आंसू थे क्योंकि अब उनको पता था लेडी बर्ड आ गए हैं तो उनका जो गार्डन है, उनका बाग अब इंशाल्लाह जल्दी सेव हो जाएगा. तो वो खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ गए. The lady birds were very hungry. जो लेडी बर्ड्स थे वो बहुत भूखे थे. The lady birds ate the pets. लेडी बर्ड्स ने पेट्स को खा लिया. and the garden blossomed. और बाग दोबारा से खिल उठा. From that day on, उस दिन से next time यानी उस दिन से grandpa's garden grew and grew. दादा जान का बाग बढ़ता और बढ़ता, फलता फूलता गया. You see, बेटा इस प्यारी सी स्टोरी में हमें क्या सीखने को मिला है कि अल्लाह ताला ने पूरा एक निज़ाम बनाया, राइट? और हम उस निज़ाम को समझें और उसको फॉलो करें. ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जगह जगह हमें ये
नसीहत की है कि वी शुड, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह नहल की आयत नंबर 11 में भी कहते हैं, ही causes to grow for you thereby the crops. अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए फसलें उगाते हैं, ऑलिव्स, जैतून, palm trees, खजूरें, ग्रेप वाइन, अंगूर, and of all the fruits, और हर तरह के फल. Indeed in that is a sign for a people who give thought. और यकीनन इन सब चीज़ों में उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो समझ रखते हैं. तो बेटा अभी देखें, एक ही ज़मीन में तो मिट्टी है, लेकिन उसी मिट्टी से फसलें भी उगती हैं, फल फूल भी उगते हैं, हर तरह के पौधे और हर तरह के फल उसमें लगते हैं. तो ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत और कितनी बड़ी निशानी है. तो हम जब भी कोई फ्रूट खाएं, जब भी कोई फूल देखें, तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह ताला की हमें तस्बीह करनी चाहिए, राइट. क्योंकि ये जितने भी बेटा जो कुदरत की जितनी निशानियां हैं, वो अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि उन लोगों के लिए हैं जो समझ रखते हैं, जो शऊर रखते हैं. और शऊर रखने वाले कौन लोग होते हैं? जो उन नेमतों को अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं और उन नेमतों के ज़रिए अल्लाह ताला से जुड़ते हैं, अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनते, राइट. सो ये हमने आज अच्छे लेसन सीखे हैं. कल इंशाल्लाह हम ग्रामर के लेक्चर से इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे. उस वक्त तक अपना बहुत ख्याल रखिए. थैंक यू एंड अल्लाह.